Hello, dear students, good morning. Students, now a very little part is still left in this second part of the chapter number second, and we would like to complete it in this lecture. So, bete, let's start reading the remaining section of this chapter. Okay, hearing him one wonders means hearing such words from the old man. Hearing such kinds of words from the old man, one can get highly surprised, thinking if he has achieved what many have failed in their lifetime. That this the old man has achieved the thing. This the old man who says that he has got nothing in his life, he has really achieved the thing which a number of people, a number of persons have not achieved, have not got in their lifetime, though they have passed their whole life, entire life, but they have not been able to make a house for their family, for their families. But this the person has been so lucky that he has made a house for his family. So it means he has got something. He has a roof over his head. He has a roof over his head. It means the person has got enough money to make a house for his family. So he is so much lucky. And he should not cry like this. The cry of not having money. The cry of not having money. To do anything except to carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home. Through this statement, it is told to us that one can easily hear the painful voice, hear the painful cries of the bangle makers living in each and every family in Firozabad, who frankly say that they have got nothing, from their parents, and they still face the acute shortage of money. So in the acute shortage of money, they can't do anything in their life except adopt the old profession, their ancestral profession of making bangles. So they can't do anything here, not even enough to eat, because they also claim that they don't have enough money to arrange proper food. They arrange daily bread for their families properly. And such kinds of painful voices can be heard ringing in each and every family in Firozabad, in this shanty town. The young men echo the lament of their elders. This the young man of Firozabad, this the young man belonging to the bangle makers' families living in Firozabad, in this small town, always blame on their elders, sorrowfully saying it that they have been forced, they have been put in this very bad profession of making bangles by their ancestors, by their parents. So they simply put the blame on their elders, okay, cursing them. The young men echo the lament. The word lament means sorrow of their elders. So they sorrowfully express their grief, express their distressed feelings, okay, towards their express this to blaming their parents. But again, I would like to tell you, the young man echo means cry painfully here. These the young men of Firozabad always cry painfully, cursing their parents, because they say that whatsoever they are in this present day life, okay, are because of their parents. Little has moved with time. The authoress also mentions it that the town Firozabad has not got all those facilities which it should have got, which it should have achieved, okay, which it should have been provided, and very little, almost nothing. There has been no progress. There has been no change. There has been no change. There has been no progress. There has been no development in the city Firozabad, it seems.
in Firozabad. Okay, years of mind numbing. Numbing means dulling. D-U-L-L-N, dulling. Mind fostering, mind dulling. Years of mind numbing toil. Toil means beta labor, hard work. Have killed all initiative. Initiative means the initiative stands for here the courage or the feelings to do something. Feelings to do something. Curiosities. Initiative stands for here the outcoming, sorry, the feelings, hearty feelings of a person. Hearty feelings. Initiative stands for beginning के लिए आता है. Okay. Years of mind numbing toil have killed all initiative and the ability to dream. This the years long mind dulling, mind fostering, mind breaking, very tedious, very hard working, sorry, very difficult, I'm very sorry, very difficult, but again I explain it. Years of mind numbing toil means having worked in this difficult, troublesome, harmful profession of making Bengal for years. The young men of Firozabad have forgot everything, have lost everything. They have also faced a tragic loss of their all curiosities, interests, and any other kinds of such feelings which can ever push them to start any work in future, and the ability to dream. And this the years long mind blowing, mind numbing, mind dulling, mind fostering, mind breaking, mind torturing, okay, tedious hard work, very difficult and troublesome work of making Bengals has also killed all their initiatives and all their abilities to dream, okay, something, to do something in their life, to dream, to do something in their life. They can hardly dream of any new thing. बेचारे कुछ नया सपन तो ले ही नहीं सकते हैं. क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि वर्षों से चले आ रहे इस मन और मस्तिष्क को पीड़ा पहुंचा देने वाले, थका देने वाले इस कार्य ने उनकी सभी प्रकार की इच्छाओं को, सभी प्रकार की योग्यताओं को, सभी प्रकार के उनके जो इनिशिएटिव्स होते हैं कुछ काम करने की, जो अभी प्रेरणाएं दिमाग में आती हैं, कुछ नए कुछ सोच जो आती है, उन सभी सोचों को उन्होंने इस काम ने उनको खत्म कर दिया है. Why not organize yourself into a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into the vicious. Vicious means very bad. The word stands for here cruel hand. Circle, cruel hand, persons of wicked person circles. Vicious means wicked circle of middlemen. The word middleman stands for here wholesalers. Wholesalers. Why not organize yourself into a cooperative? Cooperative stands for union. I ask a group of young men. Now the authoress meets a group of young Bengal makers, and when she meets a group of young men of Bengal makers families, she asks them why they can't stand themselves in unity, why they can't form a union, who have fallen into the vicious circle of middlemen. She asks a group of those persons who have been caught by the cruel hands of the middlemen, of the wholesalers, who trapped their fathers. These the wholesalers also entrapped their fathers, also caught their fathers in their nets, cruel hands, and forefathers. And the same such kinds of wholesalers also hypnotized, also kept their forefathers in their vicious circle, in their wicked circle, in their cruel hands, in their nets. वो कहती है हिंदी में, देखो भाई थोड़ा सा. Why not organize yourself into a cooperative? I ask a group of young men. मैं उन नौजवानों के एक समूह से पसंद करती हूँ. फिरोजाबाद में रहने वाले नवयुवकों के उस एक समूह से मैं पसंद करती हूँ जिन नवयुवकों ने अपने आप को जो होलसेलर्स हैं, जो
एक तो होते फुटकर विक्रेता, रिटेलर्स, एक होते होलसेलर्स, थोक विक्रेता। जो थोक विक्रेता है ना बेटा, उन थोक विक्रेताओं के चक्रव्यूह में जो फंसे पड़े हैं, थोक विक्रेता उनको थोड़ा लोभ दे देते हैं, लालच दे देते, वो फंस जाते हैं। जो उनके चक्कर में फंसे पड़े हैं, जिन्होंने उनके पिताजियों को भी अपने जाल में फंसाया, ट्रैप्ड एंड ट्रैप्ड करने के लिए होता है, मतलब कॉट देम इनटू देयर एन सर्कल्स, जिन्होंने अपने चक्कर में उनको फंसा करके रखा, उनके पिताजियों को भी लोभ लालच दे करके, उनके फादर्स, उनके पूर्वजों को भी इसी प्रकार के लोभ लालच दे करके उन्होंने अपने चक्कर में फंसा करके रखा, और अब इन बच्चों को भी उन्होंने फंसा रखा है। तो मैं उनसे प्रश्न करती हूँ, भाई तुम अपने आप को एक संगठन में क्यों नहीं खड़े कर लेते हो? तो क्या जवाब देते हैं? देखो बेटा, इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज, the response comes from that the response comes from the side of the young men, and the young men respond that if they, even if in sports we get organized, suppose all the young men get themselves organized and they make a union, we are the ones, so these are the persons, okay, who will be hauled up by the police. Who will be hauled up means picked up, pulled up, dragged up. They will be pulled up, they will be caught up by the police. Hauled up means caught up by the police, beaten, then they will be beaten very hard, they will be punished very hard. वो कह रहे हैं कि यदि मान लो, इवन इफ मीन स्पोजिंग, जस्ट इमेजिन करो, कल्पना करो, स्पोज वी गेट ऑर्गेनाइज, मान लीजिए कि हम संगठित हो जाते हैं। They respond that if they get organized themselves in a union, so they will be the such persons who will be, they are the such persons who will be caught up by the police, punished very hard, and then dragged to jail for doing something illegal, blaming on them that they have done something illegal। ये आरोप लगा करके कि भाई तुम लोगों ने तो कुछ गैर कानूनी कार्य किया है, तुम्हारे को इस प्रकार से यूनियन संगठन बनाने की कोई इजाजत नहीं है। ओके, से वो ऐसा कहते हैं। ये इनका आंसर है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको याद कर लेना है इनडायरेक्ट स्पीच में। और यदि डायरेक्ट में देते हो, इनडायरेक्ट स्पीच में आंसर लिखना बेटा, वी की जगह दे लगाना होगा आपको ना, ठीक है, यहाँ भी दे लगाना है, ठीक है। आपको आंसर लिखना पड़ेगा जैसे बैंगल मेकर्स कैन नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू कोऑपरेटिव बिकॉज दे थिंक इफ दे गेट ऑर्गेनाइज्ड दे will be, अब सीधा लिख देना, they will be caught up by the police, beaten very hard and dragged to jail for blaming that for doing something illegal, as it लिख देना। ये कह करके कि भाई तुम कुछ गैर कानूनी काम कर रहे हो, इसलिए तुम्हारे को सजा मिल रही है। जैसे there is no leader among them, the authors consider that there is no proper leader among them। मैं ऐसा मानती हूँ कि शायद इनके बीच में कोई अच्छा नेता नहीं जो इनका नेतृत्व कर सके। No one who could help them see things differently, there is no one among them who can also help them थिंक डिफरेंटली, जो उनकी मदद कर सके सोचने के लिए, कुछ अलग से नई सोच बनाकर वो काम करे। ऐसा कोई व्यक्ति उनके बीच में नहीं जो उनको अलग ढंग से कुछ सोचने के लिए कुछ नई दिशा दे। हु कैन गाइड देम प्रॉपरली, देयर इज नो वन अमंग देम हु कैन गाइड देम प्रॉपरली, हु कैन लीड देम प्रॉपरली। दैट्स व्हाई दीज द यंग मैन who look so innocent are also caught up by the cruel hands of the wholesalers, and these the wholesalers give them some temptation, greed, and they purchase their bangles at the cheapest rates, and then they sell the same bangles at the highest rates. Okay, profits goes to the middlemen, wholesalers. Their fathers are so as tired as they are, मतलब वो कहते हैं कि जितने ज़्यादा थके हारे उनके पिताजी थे, पिताजी दिखाई देते हैं, उतने थके हारे बच्चे दिखाई देते हैं। ये नौजवान जो बच्चे वो भी उतने ही ज़्यादा थके हारे दिखाई देते हैं जितने कि उनके पिताजी दिखाई देते हैं। These the young men also look as tired and exhausted as their parents, because this the work makes them fully tired and badly exhausted. They talk endlessly in a spiral. Spiral means in a structure. Spiral stands for just like a structure, एक सर्कल, एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। दे टॉक एंडलेसली इन ए स्पिरल, वो एक समूह के अंदर, वो एक स्ट्रक्चर के अंदर खड़े होकर के इस प्रकार से हमेशा बात करते रहते हैं। दे ऑलवेज से वन थिंग अबाउट देयर स्ट्रक्चर, एंड द स्ट्रक्चर मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू एपैथी। एपैथी स्टैंड्स फॉर इनडिफरेंस। इनडिफरेंस लिख लीजिए, उदासीनता जिसको कहते हैं, आलस्य जिसको कहा जाता है, लेजीनेस। They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy. First of all, they got poverty from their parents. Then they became lazy since they could not stand themselves up on their feet. Then they were given some greed
by the middleman, and later on they were threatened, saying it that they should not do such kind of work which could be illegal. So they were badly treated. They are badly treated by the bureaucrats and by the other authority persons. Okay, so this is they also face the injustice. वो कहते हैं सबसे पहले उनके अपने स्पिरल में, उनके स्ट्रक्चर में कौन सी चीज आती? गरीबी. गरीबी से उनको मिली फिर आलस्य, आलस्य से फिर उनको मतलब उदासीन हो गए, उदासीनता से फिर उनको लालच दिया गया होलसेलर्स के द्वारा, फिर उसके बाद वो अन्याय तो सहेंगे. इस प्रकार के अन्याय सहते सहते वो बहुत खराब जो है ना उनकी हालत बिगड़ी हुई है. बेटा इसको देख लो दोबारा से. दे टॉक एंडलेसली इन ए स्पिरल. जब मैं उन लोगों से पूछती हूँ तो वे लोग हमेशा एक ही बात हमेशा कहते रहते हैं. दे कीप सेइंग वन थिंग ऑन देयर पार्ट्स एज पर देयर एक्सपीरियंसेस दैट दे कांट डू एनीथिंग बिकॉज दे आर बोर्न इन पॉवर्टी स्ट्रिकन फैमिलीज. They get so much tired that they can't do anything. They can't go outside to meet the officials, and if they think to go outside to meet some officials, so they are given some temptation, greed, उनको लालच दे दिया जाता है. And such these the all things keep them fully trapped and they become the victims of injustice. इसलिए उनके साथ भी अन्याय होता रहता है. ये सभी चीज़ों के पीछे वो बंधे पड़े हैं. Listening to them, I see two distinct different worlds. Listening such kinds of work from this the group of young men, young Bengal makers. Now the authoress finds different two kinds of worlds. One of the family caught in a web of poverty burdened. First of all, she says that on the one hand she notices that here is a family which is fully burdened by the stigma of caste in which they are born. स्टिग्मा मीन्स ब्लॉट होता है, BLOT ब्लॉट, धब्बा जिसको कहते हैं. सबसे पहले तो इन लोगों को इस बात को लेकर के बहुत बड़ा अपने आप में एक इस अपमान होता है कि हम बेंगल मेकर्स के परिवार में जन्मे हैं. ओके. द अदर विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार, द मिडल मैन, द पुलिस मैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियन. एंड द सेकेंड वर्ल्ड इज ऑल्सो वेरी क्रूशियल फॉर देम. एंड दिस द वर्ल्ड कंटेन्स द साहूकार, द मिडल मैन, पुलिस मैन. कहते हैं पहली बात तो ये कि ये लोग जो है, पहली बात तो ये कि ये सब लोग जो है ना एक अपने इस बात को लेकर के हमेशा सोचते रहते हैं कि हम एक बेंगल मेकर्स के परिवार में जन्मे हैं. दे ऑफन गेट देमसेल्व्स ashamed of thinking that they are born in the Bengal maker family. Secondly, if they think something differently, so on the other hand, in the other kind of world, they meet the sahukars, middlemen, policemen, keepers of law, bureaucrats and politicians, which never allow them, which never परमिट देम टू स्टार्ट एनी न्यू वर्क इन देयर लाइफ. दूसरी तरफ की दुनिया को, एक तरफ तो वो अपने परिवार में, जिस परिवार में जन्मे हैं, चूड़ी निर्माताओं के परिवार में जन्मे, तो उसके धब्बे के नीचे दबे पड़े हैं, वो बड़े शर्मिंदे रहते हैं. यदि कुछ करने का कारण एक सोचते हैं, जो दूसरी तरफ इस प्रकार के लोग हैं जो उनको करने नहीं देते. टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन. नो, according as per the time and situation, these the elders of the Bengal makers families, okay, put the whole responsibility on the head of the child, and the child feels himself fully burdened, and he can never get himself freed from such kind of responsibility, and he finds himself fully engaged in this work of making bangles. Okay बेटे. टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैनॉट पुट डाउन. कहता है कि एक साथ मिलकर के उन्होंने बच्चे के सिर पर इतना ज़्यादा बोझ लाद दिया है, इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी दे दी है कि वो उस जिम्मेदारी से दूर हट ही नहीं सकता है, उसको वो काम करना ही पड़ेगा. अब तो बिफोर ईच अवेयर, इससे पहले को बच्चा अपनी जिम्मेदारी खुद के अपने जीवन के बारे में कुछ समझना शुरू करे, ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली एज इज फादर. वो इस पेशे को बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से स्वीकार कर लेता है जैसे कि उसके पिताजी ने स्वीकार किया था. ओके, क्योंकि उसके पिताजी को भी इसी प्रकार से उस पेशे के प्रति और अपना रुझान और उसका लगाव बढ़ गया था, जैसे कि उस बच्चे का बढ़ता चला जाता है. टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर. द ऑथर सेज वेरी फ्रेंकली दैट इफ द चाइल्ड लिविंग इन द बेंगल मेकर्स फैमिली वांट्स टू डू समथिंग इन हिज लाइफ डिफरेंटली, सो he or she will have to do the same task very courageously, very boldly, confidently. टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर. कुछ भी नया करने के लिए उस बच्चे को हिम्मत चाहिए. टू स्टार्ट एनी न्यू बिजनेस, टू स्टैंड ऑन हिज ओन फीट, टू सेट अप एनी न्यू बिजनेस ऑन हिज एज पर हिज विश, द चाइल्ड वुड हैव टू टेक सम बोल्ड स्टेप.
Daring is not part of his growing up, and the child has never been made bold during his चाइल्डहुड डेज, और उसके अपने बचपन के दिनों के दौरान में उस बच्चे को कभी बोल्ड बनाया नहीं गया. Whenever the child raised his voice, he was objected to by his parents, and he was told that he could not do any other work except engage himself in the work of making bangles. कभी बच्चे ने यदि आवाज़ उठाई भी तो उसको धमका दिया गया, उसको कभी हिम्मत उसको शास्त्र दिया ही नहीं गया. When I sense a flash of it in Mukesh, I am cheered. So the author says that she feels so much happiness when she finds a ray of new hope and ambition in Mukesh's life. When she notices that Mukesh is a different kind of child, Mukesh looks totally different from other children of his community, and he wants to do something in his life. So he at this looking at something different in Mukesh's eyes, the author feels so much delighted. वो कहती है मैं बड़ी खुश हो जाती हूँ देख करके मुकेश में मुझे कुछ अलग से करने की कोई बात नजर आती है. आई वांट टू बी मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स. और फिर दोहराता है कि मैं मैम मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ. ही विल गो टू ए गैराज एंड लर्न. ही सेज दैट ही विल गो टू ए गैराज. गैराज में वर्कशॉप होता है कि मैं एक वर्कशॉप के ऊपर कार सुधारने का काम सीखने के लिए जाऊँगा और मैं वहाँ पर उसको सीख करके आऊँगा. बट द गैराज इज ए लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम. आई विल वॉक, ही इंसिस्ट. लेकिन जब उसको मैं कहती हूँ ये तो गैराज तो बेटा वर्कशॉप तो आपके घर से काफ़ी दूर है. दिस द गैराज इज लोकेटेड एट ए वेरी लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम योर होम. सो हाउ वुड यू लाइक टू गो देयर? सो ही सेड दैट ही विल वॉक. वो कहता है कि भाई मैं पैदल चल करके चला जाऊँगा, मैं पैदल जाऊँगा वहाँ पर चल करके, लेकिन मुझे वहाँ जाना है. बट द गैराज इज ए लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम. आई विल वॉक, ही इंसिस्ट्स. अगेन ही सेज समथिंग परसिस्टेंटली. वो बहुत ज़्यादा एडमेंसी के साथ में कहता है कि मैं इस प्रकार से और जो है ना पैदल चल करके चला जाऊँगा. ठीक है. डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन? मैं इससे पसंद करती हूँ कि क्या तुम कभी हवाई जहाज उड़ाने का सपन लेते हो बेटा? डू यू एवर हैव ए ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन? क्या आपको कभी हवाई जहाज उड़ाने का कभी सपन आप कभी लेते हो? ही सडनली साइलेंट. वो कहती है कि जब मैं इस प्रकार से पूछती हूँ तो ही बिकेम स्पीचलेस. ही डज नॉट स्पीक एनी वर्ड. बिल्कुल शांत हो जाता है. नो, ही सेज स्टेरिंग एट द ग्राउंड. वो कहता है जमीन की तरफ देखते हुए. विदाउट लुकिंग इनटू द आईज ऑफ द ऑथरेस, नाउ ही स्टार्ट्स लुकिंग एट द ग्राउंड. इससे पहले स्टार्टिंग में उसकी आंखों में आंख डाल करके उसने विश्वास के साथ कहा था, लेकिन अब उसका विश्वास डगमगा जाता है. वो कहता है नहीं, मैं हवाई जहाज उड़ाने का कभी सपन लेता ही नहीं हूँ. इन स्मॉल मर्मर देर इज मर्मर स्टैंड्स पर बेटा फीबल वॉइस, लो वॉइस. देर इज एन एम्ब्रेसमेंट दैट हैज़ नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट. अब कहता है कि उसकी उस हल्की सी आवाज़ में उसकी घबराहट झलकती है. जो घबराहट आज तो घबराहट है, जो आने वाले समय में वो दुख का कारण भी बनेगी, प्रायश्चित भी करना पड़ेगा उसको. लेकिन आज उस बच्चे को थोड़ी घबराहट सी हो रही है हवाई जहाज उड़ाने को लेकर के. शायद आने वाले समय में वो समय बीतने के बाद वो सोचेगा कि मैं उस वक्त यदि सपन ही बड़ा सपन ले लेता तो शायद मैं हवाई जहाज उड़ा सकता था. So now he looks totally embarrassed, but a time in future he would surely feel repentance over his mistake. He is content to dream of cars that he sees running, rushing here and there at the high speed down the streets of his town. वो पूरे समय पर अपने कस्बे की गलियों के अंदर इधर से उधर घूमती हुई कारों को देखता रहता है और बहुत ज़्यादा संतुष्ट है वो अपने उस सपन को लेकर के. मुकेश seems totally contented to his dream of becoming a motor mechanic because he always finds the cars running here and there on the roads in the different streets of his town, Firozabad. Few airplanes fly over Firozabad. Few airplanes stands for almost nothing. अब मतलब क्या हुआ कि 2 महीने 4 महीने को एक आधे, हार्डली 1 or 2 airplanes fly over the town Firozabad in a month or in 2 months. हो सकता है 1 महीने या 2 महीने में कोई 1 या 2 कोई हवाई जहाज वहाँ से उड़ करके उसके ऊपर से उस कस्बे के ऊपर से निकलता हो. इसलिए वो कहता है कि वो कभी सपन ले ही नहीं सकता है. He can hardly dream of flying a plane in his life because he never gets such kind of experience. He never sees the planes flying over his town, over his city, over his town. तो बेटे ये चैप्टर जो आपने पढ़ा है इसको थोड़ा आप अपने भाषा अपनी खुद की लैंग्वेज में एक बार इसको समझ लेना. वी हैव कंप्लीटेड दिस द चैप्टर. नाउ आई वुड लाइक टू गिव यू some more extract based questions in my next lecture. Maybe we will be discussing about some important parts of the first 2 chapters, okay, so that you can also be able to, okay.
Write the answers very correctly. Thank you, beta.